What's up you all? Welcome back to your favorite channel She's Expression and okay so मैं सुबह उठी हूँ 9 साढ़े 9 बजे and उठते it was so peaceful because it's raining outside and I just love rains. I mean I'm a very big fan of this season. I wait throughout the year for this season and then I go out with my friends, enjoy rain. You know, I don't need anything. You don't take me anywhere. Let me just take me in a car, play some good songs, we'll order some food or get in some food and sit in the car and have it and just have a conversation. I would love that also, you know. So I just love rains आणि आज सकाळपासून पाऊस पडतोय and I had no plans. So आत्ता वाजले काहीतरी 1:30 किंवा 1:15 आसपास and I randomly took because I was in a very good mood, so I thought ki let's vlog यार. So hence I am vlogging. This is not a planned vlog. आणि बाहेर पाऊस पडतोय तर यू नो तुम्हाला असं काय काय चटकदार खाण्याचं मन होतं. सो आमच्याकडे आज इडली बनली आहे. सो आय ऑलरेडी हॅड दॅट आणि मग मस्तपैकी टी व्हीवर सॉन्ग म्युझिक प्ले केली आणि फुल ऑन मूडमध्ये मजा केली. आणि आता वी आर फायनली वर्किंग. वाईल वर्किंग आय वॉज इन अ मूड टू हॅव कॉफी. ऑल्दो कॉफी आजकाल मला जातच नाही. आय मीन आय मेक कॉफी. आय फील लाईक आय नीड टू हॅव कॉफी अँड आय मेक कॉफी अँड आय डोंट ड्रिंक इट. आय गिव इट टू समवन एल्स. आय डोंट नो व्हॉट्स रॉंग. मे बी ड्युरिंग डाएट मी ती सोडलेली. सो ती मनात ना कम्प्लिटली उतरली आहे. सो दॅट इज द केस. बट नाव आय थॉट की आत्ता जर चल मन होतंच आहे कॉफी पियायचं. सो लेट्स ट्राय की आपण काहीतरी वेगळं करूया कॉफीमध्ये. सो आय एम गोना मेक ओट मिल्कची कॉफी. ओट मिल्क पण आपणच बनवणार आहोत आणि कॉफीही आपणच त्याची बनवणार आहोत. सो आय थॉट की चलो इफ आय एम डुईंग दिस अँड आय जस्ट व्लॉग इट अँड आय शो यू गाईज की कसं करायचं ते. अँड इफ दॅट वर्क्स अँड आय लाईक इट देन आय ऑब्वियसली आस्क यू गाईज टू ट्राय इट ॲट युअर प्लेस एज वेल. So without any further ado, let's get into the vlog. But give me a moment, I need to complete my task and then I'll take you there because आतमध्ये आता जेवतायत माझ्या घरातले. So let them finish their thing. By the time I'll finish my thing and then we'll go and make that thing. So let's go. कांदा भजी. So I don't know if you guys can see or not, but it's still raining and it's so nice outside. आणि मम्मीनी सांगितलं ती थोड्या वेळाने कांदा भजी बनवणार आहे. तोपर्यंत आपण ओट मिल्क कॉफी बनवायची तयारी करूया. सो लेट्स. आय थिंक सो लाईट चांगली येते ना. लाईक इट. ओके. हे तर काहीच नाही आहे. मगाशी लिटरली काहीच दिसत नव्हतं समोर. आय मीन इतका म्हणजे पाऊस पडत होता आणि हाय पळाली आत्या होती आणि ती पळून गेली. का पळालीस ग तू? का पळालीस ग? अरे ही बघा. अरे ही बघा. अरे अरे इथे बघ ना आत्या. हाय. अरे इकडे एवढं लपायचं काय त्या? हाय बोल ना. इकडे बघ आणि हाय बोल मग जाणार. अरे इथे बघ. इथे बघ आणि हाय बोल मग मी जाते. अरे बघ ना. अरे अरे अरे
my oat milk coffee, I suddenly heard some people shouting and screaming नीचे से, and I came to see in my window to find people running here and there. अभी तो शांत लग रहा है, I'll show you guys. अभी तो शांत दिख रहा है सब कुछ, बट अचानक से ना ये झाड़ वाड़ जोर से हिले और कुछ तो कहीं से तो गिरा धड़ाम करके. सो पीपल, ये जो आपको सामने दिख रहे होंगे खड़े इधर शॉप के नीचे, या दे स्टार्टेड रनिंग. सो दे वर स्टैंडिंग देयर समवेयर दैट साइड. वहाँ से भाग के इधर आए जोर जोर से चिल्लाते हुए. सो दैट्स द सिचुएशन. सो अब तक का अपडेट तो मुझे ये मिला है कि साइक्लोन हैज़ क्रॉस्ड मुंबई का साइड एंड हैज़ मूव टूवर्ड्स गुजरात, बट इसका इफ़ेक्ट अभी तक यहाँ पे है. मतलब झाड़ वाड़ फुल फ्लो में बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ रहे हैं. बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में शांत हो रहा है. सो यस, और मैंने अभी अपडेट चेक किया, गोवा में तो लिटरली 2 दिन से नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग. इलेक्ट्रिक पोल्स गिर गए हैं, झाड़ गिर गए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट दिखा है. सो आई एम स्कैर्ड कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, मेरा काम अटक जाएगा यार, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो. So yeah, let's get back to our oat milk coffee. So we have our oats here and अभी अपन इस मिक्सी में डालेंगे. ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि अच्छा नहीं बने तो वेस्ट नहीं करना है. तो 1 स्कूप हम ओट्स का डाल दिए है इसमें. आई थिंक तो थोड़ा आधा डालती हूँ और एक आधा मैंने डाल दिया. So that's enough, I feel. Now keeping it aside and let's add some water. So let me take some water in this. So इतना पानी लिया है. So we have the milk ready and अभी अपने को क्या करना है, इसको छन्नी में से छानना है. I'm sorry if you get the गाड़ी का आवाज़ बैकग्राउंड में, because as you all know, not you all, जो भी मेरे ब्लॉग रिलीजियसली देखता है, you might know that I stay कि मेन रोड का लग के ही मेरा घर है. तो इसीलिए पिछले लॉकडाउन में ना कोई सीन नहीं था क्योंकि तभी कम्प्लीटली शट था ना, तो गाड़ियों का इतना गाड़ी हार्डली आती थी. तो तभी ब्लॉग करने में बहुत इजी रहता था, बट अभी थोड़ा यहाँ. सो एनीवे, सो दिस इज़ द ओट मिल्क. अभी अपने को इसको छन्नी से छानना है, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज छन्नी से भी छानने के टाइम ना, जो वीडियो मैंने देखा था उसमें उन्होंने ना एक हाँ, तो उसमें उन्होंने ना एक क्या बोलते क्लीन क्लॉथ लिया था और उसको ऊपर रखा था, फिर नीचे छन्नी थी और फिर ये डाला था. बट नाउ तो आई कांट फाइंड एनी क्लॉथ. आई ट्राइड फाइंडिंग इट बट डिडंट फाइंड. देखिए कुछ झोल करके हो गया, तो नहीं हुआ तो छन्नी से छान लेंगे. अभी क्या है, लेट्स सी. Just 1.5 scoop of oats, we have like around almost 300 ml of oat milk. So now there is this one process which I did not follow because I did not have vanilla essence with me. So you can add vanilla essence into this while you put it in the mixie. So make sure you added vanilla essence. It will add a flavor and you will like it. So yeah, I haven't tasted this one yet, but it looks nice. See? So yeah, and smells also nice. So I'm gonna try it now. And second thing, what I'm gonna, so this is the what do you call, equipment gifted by my friend because he knows I love coffee. So he gave me this filter coffee ka French press ka machine. Yeah, so I'm just gonna pump this milk so that it forms froth and it'll be, you know, really nice to have a frothing coffee at this time. So
Not really sure of boiling this. Do you think I should boil this and try? I'm not sure, but maybe इसका a bit थोड़ा portion लेके I'll boil and see what happens because I won't spoil the whole thing. So yeah, let me check now. तो रख दिया है boil होने के लिए. I told you कि I'll keep थोड़ा ही portion लेके I'll boil it, but no, मैंने सारा boil करने रख दिया है. Now let's see how it goes. Boil तो हो रहा है. A quick suggestion. I knew this would happen because oats, वो बहुत ज़्यादा soggy हो जाते हैं. So here it is. You can't boil it. क्या हो जाता है? I'll just show you. Let me just switch the camera. See this clumps? ऐसा clumsy हो जाता है वो. Clumps form होता है. So you better don't boil it. Use it वैसे ही. ये गरम नहीं कर सकते. I hope you don't do it. मैंने अभी इसको वापस इसमें डाल दिया है. Now I'm just gonna pump it with this and उसको मैं froth करने के बाद I'll add it to my coffee. One thing, so whatever I don't know if you guys will find me funny, crazy or insane or whatever you call me, but I never be excited about my birthdays that much. मतलब बचपन में होता था, अब भी इतना ज़्यादा नहीं है. So but what happened this year is like I don't know why I have ordered clothes for my own self, and after ordering them since that then just whenever I think of this thing I just laugh. Okay, if you're hearing this sound behind me, let me just show you guys what's happening. सब उड़ रहा है. I don't know if you guys can make it out or no, but it's the wind. जिसका आवाज़ आ रहा है. Very much windy right here. Okay, so what I was saying is that I have ordered clothes for my birthday, which I am not sure because it's a lockdown. I don't know when am I gonna go. So my birthday is on 30th of May and lockdown is till 1st June. There's nothing that I'll be able to do, not even go out. And I don't know why did I order clothes. I have just ordered. And since that I'm just laughing. Like, why did I order? But I don't know. It's not about excitement. It's not about anything. I don't know what is it about. But yeah. So am I the only person? No, so I am not the only person because I already had a word with my friend and she's like, I also did the same thing. And she literally sent me picture of her wardrobe where she has all of this new clothes aligned with the complete packaging in her closet saying after lockdown she will use it. The same goes with me. I'm not sure if I'm gonna wear it on my birthday or no, but I have them. Yes. So let's see, what do I do on my birthday? Not really sure. If at all I do anything now, I will vlog it and you guys will come to know that. Also, I haven't taken shower yet and I'm in no mood to take shower today. So we have both the cups here. One is for my brother and one is for me, and here is our milk. Just gonna pour it. That's how the coffee looks at the moment. I'm quite a lot nervous. I shouldn't have boiled it, I think so, but now let's try. Guys, on a serious note, I'm gonna try it. And let me just tell you, it's bad. I spoiled the game the moment I boiled it. I shouldn't have boiled it, and I think so it would have tasted way better than what it is tasting right now. I just spoiled it. Now my mother won't allow me to try it next time without boiling it. But chupke se I'll make sure to try it. Anyways, this is very bad.
अँड माय ब्रदर इज बहुत ज़्यादा भाव खाईन नाही येते तो ब्लॉगमध्ये. आय टोल्ड हिम कम अँड टेस्ट योर कप ऑफ कॉफी अँड टेल मी. आय नो हिज रिॲक्शन मे बी, बट ही इज वियर्ड. ओके, ही हॅज अ very weird tongue. He might even like it. I'm not sure, but I am not at all liking this. Actually, it's my fault. Next time I should probably try it without, boiling it. Because I boiled it, वो बहुत गाढ़ा हो गया, and because of which I am unable to take it in. And I feel so sad. इतना अच्छा मौसम था, मुझे कॉफ़ी पीने का मन हुआ था, and मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो गया. Anyways, but the मौसम is सुहाना. Doesn't mean कि my mood is spoiled. I'm still up. My mother is gonna make kanda bhajia. So one of my friend made kanda bhaji and just called me to feel jealous. And hello you, my mother is gonna make kanda bhaji for me as well. So I'm not jealous. Anyways. So yeah, this is all about this video guys. Do not forget to like, comment, share and subscribe. तो क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मेरा जो काम है वो भी संभालना होता है, उसके साथ व्लॉग भी करना होता है. सो इट्स गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज. एट द सेम टाइम दिस फोन इज़ इरिटेटिंग मी अ लॉट सिंस आई व्लॉग फ्रॉम माई फ़ोन यूजिंग माई फ़ोन. आजकल इसने कुछ कैमरा के लफड़े चालू कर दिए है. आई हैव टू रीस्टार्ट इट अगेन एंड अगेन वंस इट गोज़ और क्रैशेस. मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ 3-4 मिनट का, उसके बाद इट शोज़ की वीडियो हैज़न्ट सेव एंड व्हेन आई हैव टू शूट इट अगेन, तो मुझे मतलब माना तो बोल दो कैमरा कि रीस्टार्ट द होल फ़ोन टू स्टार्ट द कैमरा. दिस इज़ क्रिएटिंग अ रियली बिग प्रॉब्लम फॉर मी while I vlog and such a big disappointment. But then when you guys like my video, you comment on my videos and you watch my videos, I feel yeah, I should do it. So please motivate me because my phone is badly demotivating me. So please do that and I'll see you guys soon. Take care. मौसम को मज़ा लो if you're from Mumbai or somewhere from Gujarat or जहाँ से साइक्लोन पास होने वाला. आई जस्ट होप एवरीवन स्टे सेफ बिकॉज हम जैसे लोग तो मज़ा ले लेते हैं, बट कोई लोग रहते जो ऐसे मौसम की वजह से सफ़र भी करते हैं, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से. सो आई होप सब लोग सेफ रहे, किसी को कुछ नुकसान ना हो. एंड दैट्स इट. जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, stay healthy, which tastes good also. Okay. So yeah, I'll see you guys soon. Take care. Bye bye. Love you.